ફોટો ક્યાંથી મૂક્યો તો આવતા વખતે પાડેલો હતો. ખબર જ ના પડી ને આપણને કે અન્વી એટલી મોટી થઈ જશે, આપણે એના લગ્ન કરશું અને આપણે ખબર પણ નથી પડી કે ક્યારે એના લગ્ન આવી ગયા. તને યાદ આવે છે આદિત્ય અને અન્વી જ્યારે બહુ નાના હતા ત્યારે કેટલા ઝઘડતા? અરે બાપરે, બહુ જ ઝઘડતા હતા. અને અન્વીએ ખબર છે એક વખત આખી પેન્સિલ એના પગમાં મારી દીધેલી યાદ છે. અને આજે એ જ છોકરી મારી મોટી થઈ ગઈ. મને જેવો શાંત છોકરો મળે એ પણ મને કોઈ દિવસ સ્વપ્નમાં પણ નહોતું આવ્યું. અને આપણે બહુ જ લકી છીએ કે આપણને અમન જેવો સરસ છોકરો મળ્યો છે, જવાઈ મળ્યો છે. ગુરુજીને ગુરુમાનું સ્થાન છે જેના ઘરમાં, એવા ઘરમાં આપણી દીકરી જઈ રહી છે. સો હું બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું અને બહુ જ ભગવાનને થેન્ક યુ કરું છું કે મારી દીકરીને બહુ સારા ઘરમાં જ મળ્યું છે.
देखो जीजा जी देंगे 500 का नोट। ख्वाबों के नजर उसमें बाज दूर है नाम सफर तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। Ladies and gentlemen, क्या बात है। क्या होगा मुझको दिल चाहता है वो कहने दो तेरे पहलू में रह लूं मैं तुझको पागल कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। मुझ में कहीं ये वॉज वेरी प्रिटी। वो किसी से कभी आज तक लाइफ में कोई स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कोई कंप्लेन, किसी से झगड़ा मगजमारी कुछ भी नहीं था। हमारे ऑलवेज अनवी आती रहती थी सब फ्रेंड्स के साथ, तो हमको लगता था इसकी फ्रेंड ही है। बट जब भी मेरी डॉटर की शादी हुई तब मुझे थोड़ा सा कभी लगा था, पर फिर इसको बोलते थे हम तो वो बोलता था कि नहीं मेरी फ्रेंड ही होगा तो मैं बता दूंगा।
उसने खुद ने सामने से ही बोल दिया कि इट इज लाइक दिस। अभी हम लोग बहुत हैप्पी हैं, उसने बहुत अच्छा पार्टनर चूज किया है, वो एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी Suitable कंपनी couple रहेगी, एक दूसरे के लिए ही बने हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी उसने हमको गिफ्ट दिया है अपनी वाइफ को खुद चुन के। दोनों में एक दूसरे में हमेशा प्यार बना रहे, हमारा बस यही आशीर्वाद है। शिवोहम। केशवाय नमः। वैवस्वमन्वन्तरे अष्टानि सन्ति। सिद्धिविनायक भगवान की जय। अरे अम्बा अभय वदरायणी रे। જ્યારે અમે લોકો મોટા થયા ત્યારે અન્વીએ મને બહુ હેલ્પ કરી છે અને અત્યાર સુધી પણ એકદમ મને સપોર્ટ કરે છે. શી ઇઝ લાઈક અ સેકન્ડ મધર ટુ મી. મેં એને બહુ હેરાન કર્યું છે અને હજી પણ કરતો આવું છું એને, પણ એ હેરાનમાં મને ક્યારે ઇરિટેટ નથી થતી અને મને ક્યારે કાંઈ નથી એવું કરતી. મને શાંતિથી બધું જવાબ આપે, મને જે જોવે મને આપે છે. અને એક ચાઇલ્ડહુડમાં એક ઇન્સિડન્ટ એવો હતો કે એને મારી માટે બધું એને છોડી દીધું હતું, જસ્ટ ફોર મી, ફોર 1 year. સો આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ હર. હું બહુ થેન્કફુલ છું કે એને બહુ સરસ ફેમિલી મળી છે. ગુરુમાં, ગુરુજી, એમના મમ્મી પપ્પા, અમનના મોમ ડેડ, અમનના બેન, અમનના જીજાજી, કે બહુ થેન્કફુલ છું કે બેસ્ટ ફેમિલી એને મળી છે મારી બેનને. लेकिन मतलब 15 है और 25 मतलब 5 मामे ऐसे हैं जो अभी भी अच्छे हैं, अब वो बाकी के 10 कौन है वो पता लगाना पड़ेगा.
जेंट्स रुमाल, ठीक है? सो रेडी, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो, भागो। रुमाल रुमाल रुमाल, ओके। यहाँ पे आदित्य ने फेंक दिया और अमन ने कैच कर लिया। वाह वाह वाह, एकदम ओके। सो दोनों में सबसे ज्यादा फोन पे कौन लगा रहता है? वाह 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 वाह, कितनी देखो एकता है दोनों में। दोनों में सबसे ज्यादा सेल्फीज कौन लेता है? क्या बात है, जोरदार तालियां इस जवाब के लिए। दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? क्या बात है। दोनों में सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? जाहिर सी बात है, जाहिर। अरे 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 अरे। दोनों में सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? भाई इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, इसका जवाब हमें पहले से पता था। शादी के बाद दोनों में से खाना कौन पकाएगा? जीतू, मतलब क्या है, जीतू है यहाँ पे। दोनों में से एक दूसरे से प्यार कौन सबसे ज्यादा करता है? ओके, उठ जाइए। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। बेकरार हूँ मैं, तुझको बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। आइए जल्दी आइए दीजिए ताली। हाँ, वेरी गुड, गो। तुझको तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी में हर गम से बेगाना होता है। अनूरे दिल में प्यार हर में क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। जवाब। तारो आँख नो अफीनी, तारा बोल नो बंधानी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। क्या बात है, क्या बात है। I cannot remember any sweet memory with Aman. It's all mischievous in the childhood, fighting for TV remotes, covering the buttons so that the other cannot operate with the TV. But at the end, I love him the most. Yeah, I still remember we were sitting on the sofa facing each other. Our mom, dad wasn't there with us. So we just happened to ask each other I don't know how did it struck to us. We asked each other, do you have someone in your life? Then we each other said a nod, and then I asked, do you also have it? Then he also said a nod. And then we had made a partner deal. You won't tell mom dad about me, and you will not tell mom dad about us.
this is how we disclosed each other about having someone in our life. I still cannot forget that day. Until this day or till today, he went to Delhi. He made the point that we both were together when I was struggling to have him in my life. He was there. He stood up with me. He used to support me back in. I cannot forget what he did for me. People always say कि तुम अमन अनवी का बहुत स्मूथ हो गया, but as I can rightly say that उनका struggle हमारे साथ ही था. It was always with us. So it was a point that Aman was ready to sacrifice his relationship for her. So that made it very special. And Anvi, I think Anvi के साथ मेरा relationship काफ़ी फ्रेंडली है, जो कि नॉर्मली आप कोई जीजा एंड भाभी में जो रहता है, सो इट्स वेरी डिफरेंट. सो वी आर बिटवीन दीज मारवाड़ीज एंड वी मेक इट अ पॉइंट वी स्पीक इन गुजराती ओनली. एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट हर इज शी इज सो वेलकमिंग इन नेचर, शी इज सो वार्म एंड वेरी स्वीट. एंड आई थिंक यही चीज़ है जो एज अ डॉटर इन लॉ हमें फैमिली में चाहिए थी. सो these things are there that हमें चाहिए. And we both love you a lot. We are always there with you. Let us know whenever your help is needed. We love you. Love you, Aman Anvi. Stay blessed. कहते हैं बेटियां माँ की परछाई होती है, पर यहाँ केस उल्टा है. ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है मेरी जो मेरी पापा को डिफरेंट है. पापा लड़ाई में सबसे ज्यादा आपसे करती हूँ, पर प्यार ये भी सच है कि प्यार में मम्मी से भी ज्यादा आपसे करती हूँ. पप्पा મને માથેથી આ લાવી દો, આવી દાદાગીરી મેં તમારા પર બહુ કરી છે. મને મારી આ આદત બિચારા તમારા જમાઈમાં બહુ ભારી પડવાની છે. लोग कहाँ भटकते हैं भगवान को ढूंढते हुए, जिंदगी पर निकल जाती है, भगवान नहीं मिलते. लेकिन कोई है जो मेरे जैसा लकी है, वो कोई नहीं है कि मैं खुद भगवान की घर पैदा हुआ. मैं जो भी हुआ, 2-4 जिंदगी की जितनी भी क्वालिटीज है, वो सब नानी नाना की बताई बातों से है. जो भी हुआ उनकी वजह से. You know that I love you very much, to the moon and back, and again to the moon and back. One thing I can promise you is, आज के बाद तेरी आंखों में जो भी आंसू आएंगे वो खुशी के होंगे. Will you marry me? I love you very much, and that is all I can say. You know everything about it. Would you please marry me? Yes, I will. क्या बात है, सारे बैठ जाते हैं, काम करते हैं.
the wedding preparations is gone like crazy, because I and Aman must have fought like 300 times in this like 1 year. After my marriage is going to change is from tu to aap. That's the most difficult thing for me. From calling Aman to Suniye ji. Since last 10 years, I've been habituated to call him Aman. Arey, sunna yaar types. Now it is like Suniye ji. For a long period of time, we were just friends. And this is one of the reasons why we are more friends than each other's life partners. As you know, Aman, that I am not very expressive. I don't even say I love you so many times. So the only thing I want to say is I love you a lot. I cannot express my feelings, that's it. The most special about Anvi is she is very, very beautiful from her heart, and that is the most important thing for me. Apart from this, she loves me a lot, and I don't think I can ever match the amount of love she showers on me, and I'm very much sure she'll love my family equally. I'm very, very lucky to have you in my life. I will love you a lot. I will make sure you're happy all the time, and I'm sure you'll love me back even more. Let's have a wonderful life together.
ऑल कंग्रेचुलेशंस. लाइक तुम लोग की शादी होगी इतनी आसानी से मैंने कभी नहीं सोचा था. लाइक लेजिट. बट बहुत गलती से प्यार हो जाता है कभी कभी. इन दोनों से तो गलती से प्यार हो गया. लेजिट गलती से प्यार हो गया. तकलीफ से आए अपन इधर के. 10 दिन पहले मैंने सोच रहा था कि मेरे से नहीं होना ये शादी में आना. बट लाइक आई एम रियली ग्लैड दैट आई केम. अभी भी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते बट तब भी बहुत क्लोज है. और पता नहीं, आई एम नॉट टू इमोशनल बट आई गॉट रियली इमोशनल टुडे. यू आर. I almost cried on her wedding. That's when we realized that we were so comfortable and so close to each other, and it was very rare for four people to be so. I mean, like it was almost like we were dating. Like 4 of us were dating each other. Like we were so close. No, we are like but so close. We can date each other. Actually, I have known them longer than he has. But प्यार मेरा ज़्यादा है. Rende. I cried. You didn't cry. लड्डू मेरा बेटा तेरा. उसका मत पीयूष. थोड़ा सा साइड में. अरे ठीक है, ओके. अंदर चला जाएगा.